Hi guys, welcome to BYJU'S Exam Prep. I'm so sorry. Uh, this took some time. Yes, so how are you all? Good evening, everyone. Today we are going to discuss a master strategy for AMU BHU 2023. Now, these used to be separate exams, not anymore. There's a central exam or a test that accepts or whose scores are accepted by these universities. So let's get to know about it. And before we start, you should know that we are offering about 90% scholarship to people who register to our scholarship test and achieve a certain score. The scholarship test is going to be conducted on 5th of March at 11 a.m. Do not wait to register for it. Register as soon as you can. More than 20,000 students have won this scholarship. You can also be the next. I mean, it hardly happens that you're taking a test and not only you're competing with your peers and finding out your real strength and weaknesses, you're also getting to win something. राइट एक एक्चुअल मॉक में एक ऑर्डिनरी मॉक में ज़्यादा कुछ होता नहीं है ऑब्वियसली असेसमेंट मिलता है बट उससे ज़्यादा कुछ नहीं और इसमें आपको स्कॉलरशिप मिलेगी दैट इज़ ऑफर्ड बाय BYJU'S Exam Prep which you can utilize towards the comprehensive courses. Now we have our comprehensive courses that is launched for CLAT 23. We have about 300 hours of recorded and live, recorded sessions. We have about 300 hours of live sessions. We have mock tests that keep renewing themselves after you've taken them, obviously. And these mock tests are not just tests, they come with certain video solutions that are offered to you by your respective faculty. Then you have a monthly e-magazine which is called CLAT Ignite. It caters to you. ऐसे कोई मार्केट में मैगजीन नहीं है जो क्लैट के बच्चों के लिए बनाई जाती हो. क्लैट इग्नाइट अकेली एक ऐसी मैगजीन है. उसके अलावा बस आप एक न्यूज़पेपर पढ़िए और आपका जी के करंट अफेयर्स एग्जॉस्टिवली प्रिपेयर हो जाता है. The best thing about this course is that the content is taught and prepared by people who have qualified CLAT themselves, who have been an alumnus of national universities, so they know exactly what you need, and that is the reason why you should subscribe to this course immediately. Okay, so let us start now. Good evening. Hi guys. अब हाउ टू गेट इनटू दीज कॉलेजेस. पहले तो इनका अलग अलग एग्जाम होता था. एएमयू का अलग था, बीएचयू का अलग था, इनकी अलग तैयारी करवाई जाती थी. बट अब सिचुएशन चेंज हो गई है. फ्रॉम 2022 ऑनवर्ड्स कॉमन यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस टेस्ट, राइट, उसको कुछ भी बुला सकते हैं. आई डोंट वांट टू प्रोनाउंस इट, राइट, बिकॉज इट्स डिफिकल्ट. So they have reserved a spot among top law entrance exams in India. The candidates can apply to this exam by participating into various universities. You can select the universities that you want to get in और उसी के एंट्रेंस टेस्ट का स्कोर AMU और BHU में एक्सेप्ट किया जाता है फॉर अ 5-year integrated Bachelor of Arts in Law, which is BA LLB honors, right? So अब आपको प्रिपेयर कैसे करना है. देयर इज अ सर्टेन प्रिपरेशन दैट यू रिक्वायर ऑफ कोर्स. First you need to understand the exam pattern. Now the exam pattern is not much different. CLAT का 2020 से पहले जो पैटर्न हुआ करता था, है ना, 2020 से पहले जो CLAT का पैटर्न था वही पैटर्न अभी भी AMU और BHU के एग्जाम्स में, मतलब CUET 2023 में फॉलो किया जाएगा. लीगल में आपको लीगल प्रिंसिपल्स विच मीन्स प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस, I'm not sure, but let me come back to it. I'll confirm more about it. I don't want to impart incomplete information. So let me first confirm myself and then I'll let you know. That would be better. ठीक है, तो आप मुझे एक क्लास का टाइम और दीजिए, फिर मैं आपको बताती हूँ. नाउ लीगल का जो सिलेबस है, इट्स प्रीटी मच द सेम एज इट यूज्ड टू बी बिफोर CLAT 2020, which means you'd get principal fact based questions. साथ में, because it's AMU and BHU, they have pretty conventional patterns. They often resort to Indian political science related questions, which we call legal general knowledge.
So these are direct questions, and direct questions are not just from Indian polity, they can be from legal current affairs and legal static, which means they can ask you about case laws, landmarks, and who was the first chief justice, etc. So they can ask you all of that also. These are called direct questions. दो ही पार्ट में डिवाइडेड है. डिवीजन किस बेसिस पे होगा ये कहना मुश्किल है, बट यू शुड नो दैट प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं. जनरल टेस्ट इज द जनरल नॉलेज एस्पेक्ट. It's a general thing. Okay. We are only discussing the legal portion. I'm not discussing the entire thing. Right? So we'll come to that. Now you need to go through the relevant books, the study materials that is related to AMU and BHU entrance. जो BHU और AMU के लिए जो पुरानी किताबें थी, जो इनके प्रैक्टिस टेस्ट थे, वही काफ़ी है. You need not resort to any new material. If you already have a practice manual from which you have been practicing for these exams, that should be enough. That is more than enough, in fact. The CLAT syllabus remains the same. There are 5 sections that you have to attempt, all of which are not based on passage pattern, but they have their own, way of asking. जब वही जो CLAT 2020 का जो ट्रेडिशनल पेपर था, वही MHCT, AMU, BHU, ये सब यहीं रिपीट होता है. There's not a single book that you can resort to, but for legal you can go for AP Bharadwaj. But then AP Bharadwaj is CLAT oriented, so I would suggest you go for universal or anything that is based on ALET. ALET आपके ज़्यादा काम आ जाएगा. ALET के जो manuals हैं वो AMU BHU में ज़्यादा fit बैठेंगे. But then ALET is not legal oriented, so make sure that the questions that they have in the book have legal reasoning in it. So, okay. And obviously, previous year question papers practice is must. You need to attempt mock tests as many as you can, right? Now, you need to understand the pattern and syllabus, the type of questions, the mode of examination, number of questions, other relevant information, all of which is available on the portal. If you have registered for it, you would know कि क्या क्या मोड एग्जामिनेशन क्या क्या है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे, और क्या क्या आप ले जा सकते हैं, किस तरह से आपको अटेम्प्ट करना है. ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको पोर्टल पे मिल जाएगी. जस्ट नीड टू लॉग इन टू द पोर्टल एंड फिगर इट आउट. ओके. My strategy or some an advice that I would want you to incorporate in your study routine is to have a study routine first. Okay, so the first important thing is to understand the pattern, obviously, without which you cannot really prepare for an exam. How are the questions being asked in that exam? किस तरह के questions होते हैं, क्या pattern होता है, क्या topics पे वो लोग ज़्यादा focus करते हैं, and there are always certain topics that they follow or focus upon. It's not haphazard, thankfully. आपको एक particular पूल से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और उसी रिपोजिटरी को अगर आप बार बार प्रैक्टिस करते रहें टेस्ट के थ्रू, मॉक टेस्ट के थ्रू, तो आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी हो जाती है. ओके, इट्स नॉट that you need to, no matter what you prepare, it's always going to be insufficient. No, it's not that. If you prepare enough, if you practice enough, that is going to be enough for your exam. There's nothing called insufficient study preparation when it comes to a law entrance or a college entrance test. Janvi, actually in our comprehensive course we do cater to this also. Whenever I talk about the course that we have launched, the comprehensive course, it is not just related to CLAT. Okay, आपको CLAT के लिए पढ़ाया जाता है, शुरुआत उसी से होती है, but as we proceed further, we take care of all other exams as well. So you get extra classes, you get additional classes for these exams, Jamia and AMU, BHU, SLAT, MHCT. You have a separate course structure included in this comprehensive course for these non-CLAT exams as well. Okay, so now the first thing that we have discussed is already there. The second most important thing that I want to tell you is to have a study routine. If you're
preparing in a non-disciplined fashion, trust me, it's not going to take you much far. नो मैटर व्हाट इट इज़ दैट यू आर डूइंग विद योर लाइफ, अगर आप एक बहुत ही अनडिसिप्लिन तरह से और एक बहुत ही हैप हैज़ार्ड वे में प्रिपरेशन कर रहे हैं, ज़िंदगी में कोई भी काम कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा दूर आपको नहीं लेके जा पाएगा. Everything needs a certain routine, everything needs to have a certain timetable. I'm not asking you to write it down. Yes, AMU में इस एग्जाम का टेस्ट एक्सेप्ट होता है. So if you are qualifying the merit according to the score, they'll tell you if you are eligible for AMU. Submit the score, you're in. Okay? Yep. Yeah, so I was saying that you need to have, I'm not asking you to get a chart paper, prepare a timetable like you did in school, wake up at 5:30, do a little yoga, listen to a little music, or sorry, pray to God, and then start practicing mathematics, get ready for school, go back to school, go to school, come back from school, take a little bit of nap, and then have lunch, then go to play, do your homework, then pray again, and then go to sleep. This is not what I'm asking of you. I'm asking you to do something which is very reasonable, which is doable. So, you can set up goals in that direction, instead of writing it down on a piece of paper or on a printed or a colorful chart. You can just write down the goals that you need to achieve that particular day, and that is enough discipline that you require in your preparation. तो जो भी आप करना चाहते हैं व्हेन इट कम्स टू योर कंपेटिटिव एग्जाम, अभी यही है आपके सामने. एमएचसीटी भी है, अगर आप उसे देना चाह रहे हैं तो एमएचसीटी भी अप्रैल में होगा, ये भी उसी के आसपास ही होगा. तो आप गोल्स को सेट कर लीजिए. दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू डू फ्रॉम लीगल एंड लॉजिकल टुडे. जनरल नॉलेज कांस्टेंट रहना चाहिए. जनरल नॉलेज आपको रोज ही करना पड़ेगा, राइट? और उसके साथ आप दो एक और सब्जेक्ट्स को ऐड कर दीजिए. डू 3 सब्जेक्ट्स अ डे. यू कैन डू इट. बोर्ड्स आर coming to an end very soon. You don't have too much pressure. You can actually dedicate a significant amount to your competitive preparation. It is also important. ठीक है, वो उतना ही important है. तो थोड़ा सा गोल सेट कर लीजिए. इतना इतना लिख लीजिए कि मुझे इतने क्वेश्चंस लीगल के करने हैं, मुझे टॉट का इतना टॉपिक रिवाइज करना है, इतना सिलोजिज्म एटसेट्रा मुझे लॉजिक से प्रैक्टिस करना है, अरिथमेटिक में मुझे प्रॉफिट एंड लॉस एंड सिंपल इंटरेस्ट के कम से कम 15-20 क्वेश्चंस करने. यू आर थ्रू. एंड इफ यू डू इट एवरी डे, ट्रस्ट मी, यू आर गोइंग टू गेट द कॉलेज ऑफ योर ड्रीम्स. और ये चीज़ क्लैट में भी चलती है, ये हर कंपेटिटिव एग्जाम में काम आती है, ये हैबिट जो है, ये एक्सरसाइज. So write down the goals. As soon as you complete your goal, just check it. Okay, that I have completed that. And at the end of the day, when you go to sleep, after completing all your goals, trust me, the satisfaction that you attain will be very good for your boost. Right? The encouragement, the booster thing that you need to have while you're preparing is very important. वरना मोनोटनी आ जाती है, डेडिकेशन में कमी हो जाती है, पैशन कम हो जाता है, और आप उतनी डिलिजेंटली और सिंसियरली कंपटीशन की तरफ ध्यान नहीं दे पाते. तो एनकरेजमेंट, वो जील थ्रू आउट द प्रिपरेशन फेज बनी रहनी चाहिए, और वो बनती डेडिकेशन से ही है. अगर आप गोल्स को टारगेट कर लेंगे और you decide that I am going to complete these goals, ट्रस्ट मी, वो डेडिकेशन जो कंपटीशन मांगता है वो कभी लूज नहीं होगा, और वो एग्जाम तक बना रहेगा, और आप एग्जाम क्वालिफाई भी कर जाएंगे. ठीक है, एक सिस्टमेटिक वे में प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी होता है. आज ये पढ़ लिया, कल वो पढ़ लिया, परसों वो पढ़ लूंगा, ऐसे नहीं चल सकता. अगर आप गोल सेट कर रहे हैं तो मान के चलिए कि आपको 5-6 दिन के गोल्स एडवांस में सेट करने पड़ेंगे, और उन गोल्स को आपको किसी भी हालत में पूरा करना है. चाहे आंधी आए, चाहे तूफान, बिजली हो ना हो, अगर आपको सड़क पे बैठे लैम्प के नीचे बैठ के भी पढ़ना पड़े, सड़क पे लगे हुए लैम्प पोस्ट के नीचे बैठ के पढ़ना पड़े, तो कर लीजिए. आप भी बन जाइए BR अम्बेडकर और ऑल दोज famous people who used to study under a lamp post because there was no electricity at that place. तो ये भी करना पड़ता है, तो कर लो. वैसे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. We have inverters and power backup and what not, so you don't need to work that hard, but you make sure that you are completing your goals, and no matter what happens, you will complete them. That is the second most important thing you need to inculcate in your study routine. Hello everyone. Hello. Hi. Now stop procrastinating. I know students are
involved in boards right now. I know a lot of you are not even watching anything else, YouTube videos, completely, procrastinated your preparation when it came to with regard to all the exams that are going to happen after your boards. That is the worst thing that you can do. Competition में procrastination मतलब delaying something that you need to do right now. So instead of doing that thing or handling that thing at that moment, you choose to do it or you delay it to a later date. That is what we call procrastinating. And that is the most unhealthy habit that a person can develop. And it's not just to studying, it's with regard to everything. So whenever you're preparing, make sure that okay, so sorry. So whenever you are preparing, make sure that whatever goals that you have set, you're completing them at that day only. Instead of, I've done enough, I'll do it today, tomorrow, it will never come. काल करे सो आज करे सो अब is the most appropriate doha that is ever created. Trust me, it contains a lot of philosophy that applies on everybody's life. Nobody is immune from it. So, most of the students are delaying their competitive preparation for AMU, BHU, or JAMIA, or MHCT, all the exams that are remaining because they have boards. Even when they're not doing anything, even when they're not really studying for their boards, they're not studying for anything. प्लीज डोंट डू दैट. ये जो रैंक होल्डर्स होते हैं जिनके बारे में आप पढ़ते हैं, जिनके इंटरव्यूज आप देखते हैं, वो कभी आपको ये नहीं बताते कि उन्होंने पढ़ाई कैसे करी. मैं आपको बताती हूँ, उन्होंने पढ़ाई रोकी ही नहीं. चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे बोर्ड्स था, चाहे वाइवा था, चाहे प्री बोर्ड था, वो अपनी प्रिपरेशन को कहीं ना किसी तरह से बैलेंस कर ही रहे थे. उन्होंने एक दिन भी अपनी प्रिपरेशन को प्रोक्रास्टिनेट नहीं किया. दे वर स्टडिंग continuously, and that is what you need to do if you wish to qualify an exam with a good rank. That is that, every rank holder has done something different. The material is same, the study source is more or less the same, but how is it that only few become rank holders and rest are not even in the race? That is because they did not just work hard, they put in some special element and spices to make that dish really, really outstanding. And this is something that you need to do. Completely discarding the habit of procrastination is that special spice that you add to make your dish stand out. और ये प्रिपरेशन में बहुत एग्जाम है, बहुत सॉरी ज़रूरी है. मैंने स्टूडेंट्स को देखा है जब एग्जाम आने वाला होता है. इनफैक्ट व्हेन आई वाज टीचिंग फॉर क्लैट 23, students 1 week before the exam, in fact even 2 days before the exam, students are asking me, ma'am, if I prepare for these 2 days, पूरा 24 घंटा, will I be able to qualify the exam? अब इन बच्चों को क्या कहो, कैसे मैं उनको कहूँ कि भाई मुमकिन नहीं है. और अगर तुम क्वालिफाई कर देते हो ना तो फिर अन्याय है ये, क्योंकि एक बच्चा है जो साल भर से मेहनत कर रहा है, उसने एक भी दिन कुछ और नहीं किया सिवाय पढ़ाई के, क्योंकि उसे एक बहुत अच्छा कॉलेज चाहिए था. और तुम 2 दिन पहले आके मुझसे पूछते, मैं पढ़ूंगा तो निकाल लूंगा एग्जाम. कैसे निकाल लोगे? और अगर तुमने निकाल लिया तो उन बच्चों का क्या जिन्होंने सिंसियरली मेहनत की थी? अगर उनको सीट नहीं मिली तुम्हारी वजह से तो बहुत गड़बड़ चल रही है कंपटीशन में. तो रिग्ड है ये पूरा का पूरा सिस्टम, तो किसी को कंपटीशन नहीं देना चाहिए. राइट, तो फिर नहीं कर सकते आप ऐसा. आप 1 महीने पहले, 15 दिन पहले अपने फैकल्टी से नहीं पूछ सकते, मैम 15 दिन पहले पढ़ेंगे तो आ जाएगा क्या नंबर? 1 महीना पढ़ेंगे पहले तो क्या आ जाएगा स्कोर, एमयू में मिल जाएगा एडमिशन? नहीं हो पाएगा ऐसा. There's a lot of syllabus and you need time to cover it. So if you are telling me that you can cover it in 2 days, you are fooling yourself. You cannot fool me, obviously. You're fooling yourself. So don't land yourself in that situation. The notification is out, but we still don't have the date of the exam. You still have some time. So do not waste another day. Even if you have boards going on, take out 2 to 3 hours, which you can do, trust me, very easily. बोर्ड्स में इतना सिलेबस नहीं होता है. इवन इफ यू आर फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड, you don't have that much syllabus that would take you to that would take 20-25 days. You have a very expanded डेट शीट. बहुत लंबे लंबे गैप पे एग्जाम है. अगर फ्री टाइम भी ले रहे हो, ब्रेक भी ले रहे हो, तो उस ब्रेक में जनरल नॉलेज पढ़ सकते हो,
कुछ रिवाइज कर सकते हो, एक मॉक टेस्ट दे सकते हो। 2 घंटे एक मॉक टेस्ट के लिए निकालना है, कोई बड़ी बात नहीं है। Yes, even if you start working right now, you can still get into BHU or AMU or any exam that you are aiming for. Even MHCT for that matter. अभी से भी अगर आप कोशिश करेंगे तो एग्जाम निकल जाएगा। बात देखो वहीं पे आती है, कोशिश। कम से कम कोशिश तो करना शुरू करें, कम से कम अटेम्प्ट तो करना शुरू करें कि हाँ मैंने कोशिश की। टाइम की कमी रह गई, मैंने थोड़ी देर से शुरू की पर मैंने कोशिश की। अगली बार अगर इसी टाइम को मैं बढ़ा दूंगा, अपने आप को ज्यादा टाइम दूंगा, तो ये मेरी कोशिश सक्सेसफुल भी रहेगी। मन में वो गिल्ट ना रहे कि यार मेरे पास टाइम था, मैंने पढ़ाई की ही नहीं। मैं दे सकता था खुद को वो मौका, मैं दे सकती थी खुद को वो अपॉर्चुनिटी, पर मैंने नहीं दी। क्यों? क्योंकि मैं टीवी देख रहा था, क्योंकि मैं रिलैक्स कर रहा था, क्योंकि मुझे लग रहा था यार अभी तो बोर्ड खत्म हुआ है, अब तो मैं रिलैक्स करूंगी या करूंगा। डोंट डू दैट टू योरसेल्फ, ओके? Don't forget about the basic concepts. While preparing for competitive exams, you need to focus on the basic concepts. And a college entrance is always based on basic only. They won't ask you something which is very high-fi or very complicated. They're not going to ask you something from, calculus or integration or differentiation. No, they're going to stick to the basics that you have learned throughout your school life. So they're going to stick to basic mathematics, some a very basic logical which you would get very easily. General English, which you should know, being coming from having studied for so many years. And then legal, obviously, it is a law entrance, so they would have to tweak it a little bit. तो लीगल में आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। बेसिक्स आपको यूट्यूब के सेशंस में ही मैं तैयार करा देती हूँ। आई हैव टेकन सो मेनी सेशंस ऑन द बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ ऑल द लॉज, बीट कॉन्ट्रैक्ट्स, फैमिली, क्रिमिनल, कॉन्स्टिट्यूशन, टॉर्ट्स। इट कंटेन्स so much information. If you watch all those videos only, you will have a very strong legal base. कम से कम इतना तो हो ही जाएगा कि अगर उसमें से भी कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप अपनी समझ से दूसरे क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि आपका बेसिक तैयार हो गया है। ठीक है? अगर आपका बेसिक तैयार नहीं है, इफ यू डोंट हैव योर बेसिक्स clear, you're lacking the foundation, you're building the entire structure on thin air. It will not stand, it will collapse. Okay, if you don't clarify the basic concepts, how will you move on to the more complicated ones? तो इसलिए ज़रूरी है कि जो आपने शुरू में पढ़ाई की थी वो आपको याद रहे, और ज़रूरी है कि उसके आपने नोट्स बनाए हो। अगर नहीं बनाए हैं तो अभी फिर से बेसिक्स को रिवाइज करो, इस बार नोट्स बना के करना, एंड मेक श्योर 2-3 days before the exam you have something to revise from. Okay? Solve previous year question papers and mock tests. Obviously, that is something that you cannot definitely miss. You need to practice with previous year's question papers. They'll help you understand the difficulty level of the exam and the exam pattern as well. अब अचानक से तुम बस प्रैक्टिस प्रैक्टिस करके या बस पढ़ पढ़ के एग्जाम देने पहुंच जाओगे तो तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम समझ ही नहीं पाओगे। तुमने बस पढ़ाई की, तुमने एग्जाम को प्रैक्टिस तो किया ही नहीं। देखो, सोचने वाली बात है, you cannot become a singer by learning music or reading about music. You have several books, you have read all about music, the history, the geography, the evolution, the development, everything you have read about it. But can you become a singer just by doing that? No, you have to practice singing. You cannot just read about a thing and then go become a master in that. You won't even be able to reach the amateur level. In order to qualify or in order to excel at something, you need to do that thing. और ये एग्जाम के साथ भी चलता है। अगर आपको एक एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करना है तो जरूरी है कि आप एग्जाम के मॉक्स को देते रहें। इससे आपको क्वेश्चंस का आइडिया हो जाएगा, इससे आपको ये पता चल जाएगा कि मैं कहाँ अटक जाता हूँ, मैं पेपर का टाइम पे कंप्लीट कर भी पा रहा हूँ या नहीं, कौन से सेक्शन को मुझे सॉल्व करने में दिक्कत होती है। पढ़ के मुझे याद हो जाता है पर मैं सॉल्व नहीं कर सकता। हाँ राहुल, उसी में होगा। अभी मैंने यही तो बताया, क्यूसेट में ही एमयू और जामिया शामिल हो गया है। ये 2022 से ही शुरू है, लास्ट ईयर ही हुआ है ये। पहले अलग था इनका एग्जाम, बट अभी हो गया है ऐसा। ठीक है, 2022 से क्यूसेट के स्कोर के बेसिस पर एएमयू और बीएचयू दोनों ही एडमिशंस एक्सेप्ट करने लगे हैं।
ओके, जामिया ने ऐसा नहीं किया, जामिया का अभी भी अपना सेपरेट एग्जाम है। 22 से पहले ऑब्वियसली बीएचयू का अलग एग्जाम था, मैं एग्जाम होता था, मैंने खुद पढ़ाया है। हाँ, क्यूसेट में एमयू होता है और बीएचयू भी होता है। इट्स अ रीसेंट डेवलपमेंट, पिछले साल ही हुआ है ये। या डोंट वरी। इट्स अ रीसेंट, पिछले इट हैपेंड लास्ट ईयर ओनली, इसलिए तो आपको बताया जा रहा है। ओके, जामिया स्टिल सेपरेट, हो सकता है 1-2 सालों में जामिया भी अपने आप को क्यूसेट से ही एफिलिएट कर दे, लीव आउट द हैसल ऑफ प्रिपेयरिंग एन एग्जाम ऑन देयर ओन, जस्ट लेट द एनटीए डिसाइड एवरीथिंग। तो यप। ओके जोया, ये पता नहीं होगा आपको बच्चे, बट ये लेटेस्ट डेवलपमेंट है। इट्स वन एग्जाम फॉर ऑल द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, जो नॉट जस्ट एमयू एंड बीएचयू, ऑल बहुत सारी यूनिवर्सिटीज, इनफैक्ट इलाहाबाद ऑल्सो फॉर दैट मैटर। Allahabad, Bhimrao Ambedkar, many central universities are now taking or accepting scores from this exam. ठीक है। अब जब मॉक टेस्ट आप करते हैं तो मॉक टेस्ट में मखौल नहीं करना है। यू डोंट फूल योरसेल्फ, डोंट वेस्ट टाइम डूइंग दैट। So whenever you're taking a mock test, make sure that you're doing it properly. अब एनटीए एग्जाम अच्छे से करवाता हो या नहीं करवाता हो, बीएचयू और एमयू ने तो दे दी उनके हाथ में लगाऊं कि भाई तुम बताओ, एडमिशन बच्चे को हम एडमिशन दे देंगे, सेलेक्ट किसे करना है ये तुम डिसाइड कर लो। ठीक है, इतनी बुरी तरह से भी नहीं कराता है, दे डिसेंट इनफ, है ना। So when you're taking the exam, make sure that you're doing it sincerely. You're not fooling yourself, or you're not fooling anybody but yourself if you're not doing it sincerely. तो टाइमर लगा के बैठिए, everybody has a phone, everybody on this planet has a phone. So make sure that you have a timer and that you are taking the exam according to the time. Because if you are taking as long as you want to solve one mock test, dude, you're seriously joking. Okay, you're kidding yourself, and that is the worst thing that you can do in a competitive preparation. 2 घंटे का एग्जाम होता है, 2 घंटे लगा के बैठिए। 2 घंटे में अगर मॉक टेस्ट पूरा हो जाता है बहुत अच्छी बात है, नहीं हो पाता है तो आप फिर से उस मॉक टेस्ट को सॉरी तो आप फिर से उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करेंगे। ओके, यू आर नॉट गोइंग टू टेक दैट और डू द रिमेनिंग क्वेश्चंस अगेन। गाइस, एम आई buffering? Am I audible? Is there a problem? I don't know if I'm audible or not. Okay, I am. Audible? Okay, all good, good, good. Now this is the syllabus for Law 23. Okay, तो ये आपको लगभग तैयार रहना चाहिए। अब आप कहेंगे मैम कहाँ से पढ़ें, तो एनसीईआरटी उठा लो। ठीक है, राम बाण है ये, हर कंपटीशन में काम आ जाती है किसी तरह से। एनसीईआरटी का 11th-12th पॉलिटिकल साइंस, वो हो गया लॉ के लिए। ठीक है, वो तुम्हारे डायरेक्ट क्वेश्चंस को 80-90% तक क्लियर कर देगा। बाकी यूनिवर्सल आप ले सकते हैं, बायजूस के जो टेस्ट सीरीज है उसको आप लॉग इन कर सकते हैं, वेरी अफोर्डेबल, और उससे आप बाकी के क्वेश्चंस को लीगल के प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, यूनिवर्सल लीगल प्रिंसिपल्स के लिए, एनसीईआरटी वगैरह डायरेक्ट की स्टडी के लिए, टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट्स ऑब्वियसली। सो इंडियन पॉलिटी दैट 11th-12th स्टैंडर्ड टीचेज यू इज मोर देन इनफ। और बाकी का जो लॉ है वो आप यूट्यूब पे मेरे वीडियोस देख लीजिए, उससे आपको मिल जाएगा। ओके,
So this is what you need to understand in judiciary: the structure, the hierarchy, the constitution, roles, impartiality, appointment, etc. इतना डिटेल में नहीं पूछा जाएगा. These are the topics of law that they mostly resort to. Principal fact based questions, property, contracts, torts, criminal से ज़्यादा आते हैं. कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा टॉपिक है जिसपे प्रिंसिपल बेस्ड क्वेश्चन बनते नहीं है ज़्यादा, तो इसलिए इन्हीं लॉज पे ज़्यादा फोकस किया जाता है. ये सब कुछ लीगल करंट अफेयर्स में आ जाता है, मतलब ये पूछा नहीं जाएगा. पीजी के एग्जाम्स में ज़्यादा पूछा जाता है. बट अगर करंट डेवलपमेंट हुआ है इससे रिलेटेड कुछ, ये तो देखो, लोक अदालत, ऑम्बुड्समैन, लोकपाल, लोकायुक्त, ये इंडियन पॉलिटिकल साइंस का ही. एग्जाम की डेट नहीं आई है, लेकिन नोटिफिकेशन आ गया है. यू कैन रजिस्टर फॉर इट नाउ. अभी डेट नहीं है, ठीक है. यू कैन रजिस्टर फॉर इट. आप वो कर सकते हैं, एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं. तो ये तो इंडियन पॉलिटी में ही है, तो ये एनसीईआरटी से कवर हो जाएगा बहुत इजीली. बाकी जो आर्बिट्रेशन और लीगल डेवलपमेंट्स एक्सेट्रा है वो न्यूज़पेपर से कवर हो जाएंगे, ठीक है. ये कुछ मैगजीम्स हैं जो कि पिछले 5-6 सालों में पूछे गए हैं. एंड वेन एवर दे आस्क मैगजीम्स दे रिजॉर्ट टू दिस ओनली, यही मैगजीम्स पूछे जाते हैं. तो इसको क्लास के बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लेना. ये रहे मैगजीम्स बाकी के. यही इन्हीं मैगजीम्स में से अगर 1-2 क्वेश्चन आते हैं, 1 to 2 क्वेश्चन मैक्सिमम, वो इन्हीं मैगजीम से आएंगे. इसके अलावा नहीं आएगा कुछ भी. ओके, मतलब आना नहीं चाहिए. These are the maxims that they generally ask, and they have been asking these maxims only for the past 5-6 years. So the probability is that they are not going to ask anything new. They're going to stick to the same material, right? So this is what we have for today, guys. I hope you enjoyed and learned from this session. I'll see you very soon. Please like the session, don't leave without liking. And if you have not subscribed to our channel, please do it and press that bell icon so that you get notified for all the videos that I'm uploading. You can follow us on Instagram at BYJU'S Exam Prep Law. You can like us on Facebook. You can join our Telegram channel, and you can also download our app from the Google Play. And I shall see you again very soon. Till then, everybody take care. Bye bye. Thank you so much.